So one question is that, like, what is the career of the, the connector, or, the networking guy over here? I mean, like, is there a lot of room? Is there a lot of struggle? Because you are the one that you have just pursued a career in this dimension, right? हाँ जी, So I love asking this question from the person who has already done that, right? बड़ा You अच्छा have सवाल already done that, and you बड़ा have अच्छा done, सवाल yeah, you have done it quite remarkably well, right? Thank you so much. So what is, there in this field for the new young individuals who think themselves being the connector, who think themselves being, the networking guy? Yeah. Because networking is also a piece of puzzle. Yeah. I mean, like, we know that if somebody is doing a networking for us, if somebody is connecting us with somebody, so that is the piece of puzzle we all require. Yeah. ये हम सबको जरूरत है इसकी. ज़रूरत है. तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हमारे मसला यहाँ पे ये है कि हमारी यूथ, हमारे यंग टैलेंट, दे डोंट टेंड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. दे फील लाइक दोज कन्वेंशनल जॉब्स एग्जिस्ट. बैंक में जॉब है, सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब है, डेवलपमेंट है, दे डोंट थिंक लाइक न्यू जॉब्स डू एग्जिस्ट. कि आप एक चीज़, एक प्रोसेस को देख रहे हैं, उसके अंदर आप लूप होल आइडेंटिफाई करके आप कहें कि यार यहाँ पे मैं फिट इन होता हूँ. तो वी डोंट टेंड टू थिंक दैट वे अराउंड. So you come up with that sort of, a dimension that you have explored in your life. Do you feel like, is there a future for a person who can, communicate well, who can be confident, who can close the deals, who can be a part of negotiations, who can just, close things up altogether? So is there a future for him, or what do you say about it? Or is it very tough? So मैं इसका जवाब ये दूंगा कि सो मेरे मेंटर ने यूसुफ हुसैन जो CEO थे इग्नाइट नेशनल टेक्नोलॉजी फंड के एक दौर में, तो एक ऑनलाइन सेशन चल रहा था 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे. मैं सुन रहा था अपने फ़ोन पे, तो उन्होंने कहा कि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, ये होगा वो होगा, सारी इंडस्ट्रीज चली जाएंगी. हाँ, कुछ चीज़ें रहेंगी दुनिया में, जो चीज़ें रहेंगी उसमें एक चीज़ है कि जो ह्यूमन डीलिंग है, जो कि पीपल स्किल्स है, राइट. क्योंकि जो सब कुछ हो जाए फिर भी इंसानों ने इंसानों से डील करना है. इंडस्ट्रियाँ बदलती रहेंगी. तो उस मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि अच्छा, अगर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही है तो फिर टेक्निकल काम तो आप सारे कर ही लेंगे. मैं पीपल स्किल पे फोकस करना चाहता हूँ. और मुझे लगता है कि इंक्रीजिंगली जिस तरफ सोसाइटी जा रही है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है. देखिए, आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, आप किसी डोमेन में चले जाएं, आपको बेसिकली लोग चाहिए जो चीज़ों को समझें, जो कनेक्ट कराएं, जो कि शायद खुद टेक्निकल ना हो, बट वो ये समझते हो कि अच्छा यार, आपस में किस तरह चीज़ें चलती हैं, बिजनेसेस कैसे कनेक्ट करते हैं. तो एक जो कनेक्टर का रोल है वो पाकिस्तान जैसे माशरे में इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका काम वेटिंग करना भी है. देखिए, मेरा एक काम ये भी होता है कि मैं जिससे मिलाऊं उस पर एक ट्रस्ट फैक्टर है. तो अगर हम किसी गलत बंदे को मिला दें तो हमारा इंप्रेशन भी ख़राब होगा, एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा. तो पाकिस्तान जैसे माशरे में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु मे नॉट शेयर द सेम वैल्यूज़ दैट वी डू. सो हाउ डू यू फिगर आउट कि यार अच्छा, किस तरह के बंदे को किस तरह के बंदे से कनेक्ट कराना है, नॉट जस्ट बेस्ड ऑन प्रोफेशनल स्किल बट ऑल्सो बेस्ड ऑन कि यार इसका वर्क एथिक क्या है, इसका वर्क एथिक क्या है, ये बात किस तरह करता है, ये बात किस तरह करता है, ये क्या ऑफर कर रहा है, ये क्या सुनना चाहता है. और वो तो आज जो समझे कि वो इस डोमेन में आना चाहता है, आई थिंक इट्स अ लवली बिजनेस. आई थिंक देयर इज सो मच रूम, देयर इज सो मच वैल्यू दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस. और फेसबुक भी क्या है, इट्स जस्ट कनेक्टिंग पीपल. ऑल ऑफ दीज नेटवर्क्स आर कनेक्टिंग पीपल. When you are an individual doing this, you just bring in the human experience. But essentially, this is the core of what humanity is. It is connecting people.